children, hope you all doing good. Let's start today's chapter, conservation of plants and animals. Learning objectives, factors affecting biodiversity, conservation of biodiversity, biosphere reserves, national parks, wildlife sanctuary, reforestation and recycling of paper. Biodiversity refers to the variety of life forms such as plants, animals and microorganisms that live in a particular region or habitat and their interaction with each other. It denotes the biological richness of an ecosystem. An ecosystem includes all the living organisms such as plants, animals and microorganisms and their interaction with the physical environment such as air, water and soil in which they live. There are millions of plants and animals on the earth. The plants found typically in a particular area from the flora of that area. The term fauna represents the wildlife found in a particular area or geographical region. The variety of flora and fauna and microorganisms is an area constitute the biodiversity of that area. Biodiversity also includes the interrelationship and the relationship with the environment. अब देखिए बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स, जैसे कि प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो किसी पर्टिकुलर रीजन या हैबिटेट में रहते हैं एंड एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं. ये किसी भी एक इकोसिस्टम की बायोलॉजिकल रिचनेस को डिनोट करता है. एक इकोसिस्टम में आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं एंड उनका इंटरैक्शन उस फिजिकल इन्वायरमेंट में, यानी कि आपका एयर, वाटर, सॉइल जहाँ पे वो रहते हैं. तो अर्थ में मिलियंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं. तो जो प्लांट्स किसी पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं टिपिकली वो बनाते हैं उस एरिया का फ्लोरा एंड टर्म फौना यूज किया जाता है आपके जो वाइल्ड लाइफ को रिप्रेजेंट करता है found in a particular area or a geographical region. Factors affecting diversity. Factors affecting biodiversity. There are many factors that can cause harm to the Earth's biodiversity that includes deforestation, pollution, climate changes, overexploitation of natural resources as well as natural calamities. Deforestation. Large-scale cutting down of forest is called deforestation. It results in the loss of habitat. There are various reasons for clearing land by cutting down trees. Land is cleared for agricultural purposes to meet the demands of the growing population. Pulp from trees is used for making paper and packaging materials. Land is used to build houses, industries, dams and roads. Wood from trees is used for making furniture and also used as a fuel. Deforestation also occurs when trees are destroyed by natural causes such as forest fires and severe drought. अब देखिए डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है कि लार्ज स्केल में फॉरेस्ट को काटना, दैट इज डिफॉरेस्टेशन. अब डिफॉरेस्टेशन हो क्यों रहा है? सबसे पहले तो हमें लैंड की ज़रूरत है एग्रीकल्चर पर्पसेस के लिए क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन है वो बहुत बढ़ रही है. ट्री का जो पल्प है उससे यूज़ किया जाता है पेपर बनाने के लिए या पैकेजिंग मटीरियल बनाने के लिए. लैंड को यूज़ किया जा रहा है घर बनाने के लिए, इंडस्ट्रीज, डैम्स या फिर रोड्स. और जो वुड होती है ट्रीज़ की उससे फर्नीचर बनाया जाता है और एज अ फ्यूल भी यूज़ किया जाता है. और कई बार जो है डिफॉरेस्टेशंस आपके नेचुरल कॉजेज़ की वजह से भी हो जाता है, जैसे कि फॉरेस्ट फायर है या कई बार सीवियर जब सूखा पड़ जाता है यानी ड्रॉट होता है. तो as the human population has increased, the demand for houses, food and other products has also increased. Deforestation is done by humans to fulfill their need for land. It is done to meet the demands of the growing population. It results in the loss of habitat of several plants, animals and microorganisms. अब देखिए पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उनकी जो डिमांड्स हैं हाउसेस, फूड या दूसरे प्रोडक्ट्स की उनको भी पूरा करना है. तो इस चक्कर में डिफॉरेस्टेशन हो रहा है जिसकी वजह से बहुत सारे प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं उनका जो हैबिटेट है वो पूरा का पूरा वो खो चुके हैं. Consequences of deforestation. Deforestation has severe effects on the environment. It has the following serious consequences. Global warming. Carbon dioxide is a primary greenhouse gas. It traps the heat from the sun and keeps the earth warm. We have learned that atmospheric carbon dioxide is used by green plants for the process of photosynthesis. Without trees and plants, the level of carbon dioxide will increase in the atmosphere, leading to greater trapping of the Earth's heat and increasing the temperature on Earth. Due to accumulation of carbon dioxide, the atmosphere retains the heat of the sun. This results in a higher temperature and causes global warming. Deforestation की वजह से जो सबसे पहला इफेक्ट है वो है ग्लोबल वार्मिंग. आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस है आपकी. ये क्या करती है? सन की हीट को ट्रैप करती है एंड अर्थ को वार्म रखती है.
अब देखिए, अब हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ काटेंगे तो पेड़ आपके कम हो जाएंगे, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है वो बढ़ जाएगा, तो ज़्यादा हीट को वो ट्रैप करेंगे, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा, और उसके बाद क्या होगा, इसकी वजह से आपका ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। Climatic changes and pollution. The climate of a region changes due to deforestation. It increases pollution level and decreases rainfall. Increase in the level of pollution in the environment results due to decrease in the number of plants and trees on the earth. अब देखिए, डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्लाइमेटिक चेंजेस भी आते हैं उस रीजन में, जैसे कि आपका पोल्यूशन बढ़ेगा, रेनफॉल डिक्रीज हो जाएगा। पोल्यूशन अगर का लेवल बढ़ा इन्वायरमेंट में, तो अब उसका क्यों बढ़ता है एक्चुअली, क्योंकि जो नंबर ऑफ प्लांट्स या जो ट्रीज हैं वो अर्थ में आपके कम हो रहे हैं। इम्बैलेंस इन एटमॉस्फेरिक गैसेस. डिफॉरेस्टेशन डिस्टर्ब्स द बैलेंस बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन लेवल इन द एटमॉस्फेयर. Oxygen content is reduced and carbon dioxide accumulates. That is dangerous for all living beings. Disturb water cycle. The water cycle gets disturbed due to rise in temperature, resulting in less rainfall. The chances of drought increases. Reducing water table. In the absence of tree cover, rainwater cannot infiltrate into the ground to charge the aquifer. It leads to the lowering of groundwater level in the absence of replenishment. अब देखिए, डिफॉरेस्टेशन जो है कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का जो लेवल है एटमॉस्फेयर में, उसमें इम्बैलेंस कर रहा है, वो डिस्टर्ब हो रहा है, वो आपकी वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो रही है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिससे कि लेस रेनफॉल हो रही है, राइट। वाटर टेबल जो है वो भी रिड्यूस हो रहा है बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। ड्रॉट्स. Trees and plants use the groundwater to prepare food. Rest is released into the atmosphere through transpiration. This helps in the continuation of water cycle. With few or no trees, transpiration does not take place, thereby disturbing the water cycle. Thus, the land receives less or no rainfall, resulting in droughts. Deforestation increases the chances of natural calamities such as floods, droughts, and famines. अब देखिए, ट्रीज एंड प्लांट्स क्या करते हैं, वो ग्राउंड वाटर को यूज़ करते हैं, खाना बनाते हैं, और रेस्ट वो एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते हैं ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस से। इससे क्या होता है कि वाटर साइकिल जो है उसका कंटिन्यूशन में वो रहता है। अब अगर कम ट्रीज होंगे या नहीं होंगे तो ट्रांसपिरेशन नहीं होगा, जिससे कि वाटर साइकिल डिसरप्ट हो जाएगी। फिर लैंड में क्या होगा, आपको नो रेनफॉल आएगी या कम रेनफॉल आएगी, जिसकी वजह से आपका ड्रॉट हो जाएगा। हैबिटेट एंड वेजिटेशन लॉस. Cutting of trees on a large scale destroys the natural habitat of several plants, animals, and microorganisms. This disturbs the ecological balance in nature. Several food chains and food webs gets affected due to this imbalance. Soil erosion and desertification. The roots of trees hold the top layer of the soil by binding the soil particles together. This prevents soil erosion. Absence of trees leaves the top layers of the soil exposed to water and wind. As a result, the top layer gets washed away. In this way, fertile land gradually converts into desert. It is called desertification. अब देखिए, डिफॉरेस्टेशन की वजह से बहुत सारे एनिमल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स वो अपना नेचुरल हैबिटेट खो चुके हैं, जिसकी वजह से इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो चुका है नेचर में। बहुत सारी फूड चेन और जो फूड वेब है वो अफेक्ट हो गए इस इम्बैलेंस की वजह से। आप देखिए, सॉइल इरोजन होता है क्योंकि ट्रीज़ का काम क्या होता है, जो ट्रीज़ की रूट्स होती हैं वो सॉइल को बाइंड करके रखती हैं, लेकिन कम ट्री होंगे या नो ट्री होंगे तो क्या होगा, सॉइल इरोजन होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, वो धीरे धीरे वो जो फर्टाइल लैंड है वो ग्रेजुअली डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाएगी, एंड दैट इज कॉल्ड डेजर्टिफिकेशन। पोल्यूशन. Pollution of natural resources such as air, water, and soil is a threat to the survival of biodiversity. Air becomes polluted when smoke and poisonous gases are released by vehicles and factories. Acid rain results when sulfur dioxide and nitrogen oxides react with water, oxygen, and other chemicals to form sulfuric and nitric acids. These then mix with water and other materials before falling to the ground. This is one of the major consequences of air pollution. It damages the crops and decreases the fertility of the soil. Also, water from the fields contain fertilizers and pesticides, which eventually drain into the nearby water bodies. This endangers the aquatic ecosystem as the polluted water kills aquatic plants and animals. The chemicals released by the industries pollute water bodies as well as atmosphere. Use of pesticides in agriculture, growing industrialization, and increasing number of transport vehicles and constructions work add pollutants to the air, water, and soil. देखिए, अब नेचुरल रिसोर्सेज का पोल्यूशन हो रहा है, एयर, वाटर एंड सॉइल का। एयर जो है पोल्यूट हो रही है
पॉइजनस गैसेस की वजह से, स्मोक की वजह से जो व्हीकल्स या फैक्ट्री से निकलता है। एसिड रेन होती है जब आपका सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स पानी के साथ रिएक्ट करते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, तो दूसरा केमिकल आपका बनता है सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। ये वाटर के साथ मिक्स होकर और दूसरे मटेरियल के ऊपर जब गिरते हैं तो ये एक मेजर कॉन्सिक्वेंस है आपका एयर पोल्यूशन का। क्रॉप्स को डैमेज करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को डिक्रीज कर देते हैं। वाटर फील्ड में आपके फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स होते हैं जो इवेंचुअली आपके वाटर बॉडीज में जाते हैं। इसकी वजह से जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है वो इंडेंजर में है। केमिकल्स जो इंडस्ट्रीज रिलीज करते हैं वाटर बॉडीज को पोल्यूट कर रहे हैं और साथ ही साथ एटमॉस्फेयर को भी पोल्यूट कर रहे हैं। Illegal hunting or poaching of wild animals is one of the major threats to biodiversity. Tigers, elephants, leopards, rhinoceros, and whales are under threat as they are hunted for their skin, teeth, and other body parts. Let us understand the meaning of extinct and threatened, vulnerable, rare, and endangered species. Rare species. The species that exist in small number are localized only in certain geographical areas and may enter the vulnerable category are called rare species. For example, wild buffalo, Asiatic wild ass and golden cat. देखिए वो स्पीशीज़ जो आपके स्मॉल नंबर्स में है और जो किसी सर्टेन जियोग्राफिकल एरियाज में है और वो जल्दी ही वल्नरेबल कैटेगरी में भी आ सकते हैं, उन्हें कहते हैं रेयर स्पीशीज़। फॉर एग्जांपल आपका है वाइल्ड बफलो, एशियाटिक wild ass and golden cat. Vulnerable species. These are species that are likely to enter the list of endangered species due to their rapidly decreasing population. The species listed as vulnerable are protected by the Endangered Species Act (ESA). For example, musk deer, sambar and black buck. ये वो स्पीशीज़ हैं जो कभी भी इंडेंजर्ड स्पीशीज़ में आ सकती हैं क्योंकि इनकी पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है। फॉर एग्जाम्पल आपके vulnerable species हैं। Extinct species. The term extinction is applied to the species of organisms that have completely disappeared from the face of the earth. The extinction of a species of organism can take place naturally or unnaturally. Natural extinction of species of organisms take place due to changes in the environmental conditions that the organism is not able to cope with. Unnatural extinction of a species of organism occurs due to humans. Various human activities such as hunting, poaching, etc. result in the elimination and destruction of the natural habitats of wild animals. Some examples of extinct animals are dinosaurs, Archaeopteryx, a fossil bird, dodo, etc. Recently, animals such as Sikkim stag, mountain quail, pink-headed duck have entered the list of extinct animals. Extinct animals वो हैं जो आपके अब completely disappear हो चुके हैं अर्थ से। अब इसके भी आपके कुछ नेचुरली होते हैं, कुछ अननेचुरल होते हैं। जैसे नेचुरल में हम बात करें तो जैसे आपके डायनासोर्स आपके एक्सटिंक्ट हो गए क्योंकि कुछ इन्वायरमेंटल चेंजेस आए जिसके साथ वो कोप नहीं कर पाए। अब कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जैसे ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से जो आपके एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, जैसे लोग इलीगल हंटिंग करते हैं, जैसे पोचिंग भी कहते हैं। अब जैसे रिसेंटली आपके सिक्किम स्टैग, माउंटेन क्वेल, पिंक हेडेड डक, ये सारे के सारे एक्सटिंक्ट एनिमल्स के लिस्ट में आ चुके हैं। Endangered species. These are species that are on the verge of extinction as they are decreasing in number due to killing and reduction of habitat. Some examples of endangered species are Asian lions, tigers, one-horned rhinoceros, leopard, bison. One-horned rhinoceros were commonly found in northeastern parts in India, but only few of them left now in Assam and Jaladapara. अब देखिए endangered species आपके वो है कि एक्सटिंक्शन के कगार पे है क्योंकि इनकी नंबर डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि या तो इनको मारा जा रहा है या फिर क्योंकि इनका हैबिटेट रिडक्शन हो रहा है। तो कुछ आपके एग्जांपल्स हैं जैसे कि ये सारे आपके किसमें आए, ये सारे के सारे आपके endangered species हैं। Changing climatic conditions due to deforestation and increasing pollution, the surface of Earth is becoming warmer day by day. The polar ice caps are starting to melt at an alarming rate, endangering the polar ecosystem. Species like polar bears are losing their habitat. डिफॉरेस्टेशन की वजह से पोल्यूशन बढ़ रहा है, अर्थ का जो सरफेस है और ज़्यादा गर्म हो रहा है जिसकी वजह से आपकी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और जिसकी वजह से पोलर आइस कैप्स में आपकी जो बर्फ़ है वो मेल्ट हो रही है। अब जैसे पोलर बेयर जो आपका पाया जाता है आपके पोलर आइस कैप्स में, उसका जो हैबिटेट है वो अपना हैबिटेट लूज़ कर रहा है। मेल्टिंग आइस कैप्स एज डिस्कस्ड earlier may also result in gradual rising of sea levels causing floods and destruction in many coastal ecosystem. अब देखिए
अगर आपके ग्लेशियर्स मेल्ट हुए, पोलर आइस कैप्स आपके मेल्ट हो रहे हैं, तो उसकी वजह से सी लेवल आपका बढ़ेगा, जिसकी वजह से फ्लड आएगी, बाढ़ आएगी और बहुत सारे जो कोस्टल इकोसिस्टम है वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाएंगे. Endemic species. Species of plants and animals which are found exclusively in a particular area are called endemic species. A particular type of animal or plant may be endemic to a zone, a state or a country. These species are more likely to become extinct as they are localized in very small part of the world. Some of the endemic species in India are the mottled wood owl, golden langur and Malabar parakeet. If new species are introduced in the natural habitat of endemic species, it adversely affects the population of endemic species. This action may also change an endemic species into an endangered one. देखिए आपके कुछ प्लांट्स या एनिमल्स की स्पीशीज़ होती हैं जो आपके एक्सक्लूसिवली किसी पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं एंडेमिक स्पीशीज़. अब पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनिमल या प्लांट आपका एंडेमिक किसी जोन में होता है, या जैसे हम एंडेमिक जोन की बात करें या स्टेट या फिर कंट्री की, तो ये स्पीशीज़ दे आर मोर लाइकली टू बिकम एक्सटेंट क्योंकि ये वर्ल्ड के एक स्मॉल पार्ट में लोकलाइज्ड है, राइट. अगर हम इंडिया में एंडेमिक स्पीशीज़ की बात करें तो वो हैं आपके मॉटेड वुड आउल एंड आपका गोल्डन लंगूर एंड मालाबार पैराकीट. Overexploitation of natural resources and natural calamities. Overexploitation of plants and animals for food, fuel, fur, wood, raw materials for different purposes adversely affects the biodiversity. International trade in wildlife and wildlife product has threatened the existence of tigers, bears, foxes, rhinoceros and other wild animals. Natural calamities such as tsunami, earthquakes, cyclone, drought, hurricanes, flood, etc. contribute to the destruction of biodiversity. देखिए ओवर एक्सप्लॉयटेशन होगा प्लांट्स या एनिमल्स का फूड के लिए, वुड के लिए, रॉ मटेरियल या फ्यूल के लिए या डिफरेंट पर्पसेस के लिए, तो वो बायोडाइवर्सिटी को एडवर्सली अफेक्ट करेगा. अब कई बार नेचुरल कैलामिटीज जैसे सुनामी आ गया, हरिकेन है, साइक्लोन है, इनकी वजह से भी बायोडाइवर्सिटी का डिस्ट्रक्शन हो रहा है. कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी. Conservation of biodiversity means the careful management of species of plants and animals and their preservation in order to protect them from extinction. The preservation of flora and fauna from destruction is called conservation. Conservation therefore means the wise use of natural resources. It involves various strategies and has the following aims. To protect the natural resources, living and non-living. To preserve the natural resources. देखिए बायोडाइवर्सिटी को आप कैसे कंजर्व कर सकते हैं. नेचुरल रिसोर्स को आपको प्रोटेक्ट करना है, चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग हो, आपको नेचुरल रिसोर्स को प्रिजर्व करना है. द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट स्टेप्स आर प्रपोज्ड बाय साइंटिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी. Conservation of the species which fall in the category endangered, vulnerable or rare species. Proper planning of land and water utilization to ensure the protection of wildlife in their natural habitat. Preservation of as many varieties of food crops as possible. Protection of forests from forest fires and overgrazing animals. अब देखिए आप कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स ले सकते हैं जो कि साइंटिस्ट ने प्रपोज किए. सबसे पहले तो स्पीशीज़ का कंजर्वेशन करना है जो कि आपके एंडेंजर्ड की कैटेगरी में है, वल्नरेबल की कैटेगरी में है या रेयर स्पीशीज़. प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए लैंड और वाटर यूटिलाइजेशन की, राइट. बहुत सारी वेराइटीज़ हैं फूड क्रॉप्स की, उनका प्रिजर्वेशन होना चाहिए एंड प्रोटेक्शन होनी चाहिए फॉरेस्ट की फ्रॉम फॉरेस्ट फायर्स एंड ओवरग्रेजिंग बाय एनिमल्स. Strict laws to be framed to check poaching, illegal hunting and trade of animal products. Restoration of water bodies such as rivers, ponds and streams to their natural conditions. Strict laws बनने चाहिए उनके खिलाफ जो illegal hunting या poaching करते हैं, right? ये जो animal products में trade करते हैं. Water bodies का restoration होना चाहिए जैसे कि rivers, ponds या streams का उनके natural conditions में. Popularizing of forestation drives such as Van Mahotsav. Wildlife sanctuaries and national parks should be made keeping in mind the feeding, breeding and environmental needs of the species concerned. Afforestation को promote करना चाहिए, ठीक है, जैसे कि वन महोत्सव प्रोग्राम चलाया जाता है और आपका wildlife sanctuaries या national parks आपके बनाने चाहिए, right? The government has taken steps towards conserving biodiversity. It has established wildlife sanctuaries, national parks, biosphere reserves. In India, there are about 441 wildlife sanctuaries and about 80 national parks. The purpose of establishing protected areas is to maintain a healthy balance in nature and to prevent the extinction of endangered wild animals. देखिए गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे स्टेप्स भी लिए हैं. उन्होंने लगभग 441 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं हमारे इंडिया में, अबाउट 80 नेशनल पार्क्स हैं.
तो जो पर्पस है इन प्रोटेक्टेड एरियाज़ का वो क्या है कि हेल्दी बैलेंस जो है वो नेचर में बना रहे और जो आपके इंडेंजर्ड वाइल्ड एनिमल्स हैं उनका एक्सटिंक्शन ना हो सके। Biosphere reserves. Biosphere reserves areas are meant for the conservation of the biodiversity of a specific area. It also helps in maintenance of biodiversity culture and may also have other protected areas in it. The Panchmari Biosphere Reserve is one example of a biosphere reserve. It has one national park named Satpura and two wildlife sanctuaries named Bori and Panchmari. The flora of Panchmari Biosphere Reserve includes all the plants and vegetation types such as arjun, sal, teak, mango, jamun, silver ferns, etc. The fauna of Panchmani Biosphere Reserve includes chinkara, leopard, tiger, wild dog, barking deer, wolf, cheetal, etc. India has 14 biosphere reserves. Some of them are mentioned below. देखिए बायोस्फीयर रिजर्व एरियाज आपके हैं बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए किसी स्पेसिफिक एरिया में। इससे क्या होता है कि बायोडाइवर्सिटी में एक मेंटेन बना रहता है, मेंटेनेंस रहता है बायोकल्चर का एंड दूसरे प्रोटेक्टेड एरियाज़ का। जैसे पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो ये एक एग्जांपल है बायोस्फीयर रिजर्व का। इसमें आपका एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है सतपुड़ा, दो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं बोरी एंड पंचमढ़ी एंड फ्लोरा जो है पंचमढ़ी के आपको देखिए एग्जाम्पल्स दिए गए हैं दीज एंड द फोना, ये सारे। अब ये देखिए ये सारे ही आपके क्या हैं कुछ बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं। सिमिलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व उड़ीसा, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश, सुंदरबंस बायोस्फीयर रिजर्व वेस्ट बंगाल, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व उत्तराखंड, कान्हा बायोस्फीयर रिजर्व मध्य प्रदेश, काजीरंगा बायोस्फीयर रिजर्व असम, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। नेशनल पार्क्स. It also preserves flora, fauna, landscape and historical structures of the area. It is diverse enough to protect the complete ecosystem. These areas are strictly reserved for the betterment of wildlife. In these places, animals can freely move around. Exploitation of natural resources and human activities like grazing, cultivation, fishing, etc. are strictly prohibited in these parks. However, under certain conditions, people are allowed to enter national parks to observe animals roaming in their natural environment. There are more than 100 national parks in India. Some well-known national parks in India are, देखिए नेशनल पार्क भी जो है फ्लोरा, फोना, लैंडस्केप या हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर एरिया का उसको प्रिजर्व करता है और ये आपके कंप्लीट इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करते हैं। अब जैसे कि आपके इन प्लेसेस में क्या होता है एनिमल्स फ्रीली मूव करते हैं। यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज का जो एक्सप्लॉयटेशन है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ है लाइक ग्रेजिंग, कल्टिवेशन, ये स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड होती हैं। तो हमारे इंडिया में आपके मोर देन 100 नेशनल पार्क्स हैं। Some well-known national parks in India are Jim Corbett National Park, Uttarakhand, Tadoba National Park, Maharashtra, Kanha National Park, Madhya Pradesh, Palamu National Park, Jharkhand, Hazaribagh National Park, Jharkhand. Do you know Prime Minister Narendra Modi released cheetahs flown in from Namibia into a special enclosure at the Kuno National Park in Madhya Pradesh. देखिए चीतास जो थे वो हमारे इंडिया में नहीं थे, तो नरेंद्र मोदी जी हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नामीबिया से ही आए हैं और इनको रखा गया है कूनो नेशनल पार्क जो कि आपका मध्य प्रदेश में है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. लार्ज एरियाज ऑफ लैंड आर टर्न इनटू वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज टू प्रोवाइड अ नेचुरल एनवायरनमेंट फॉर वाइल्ड एनिमल्स टू लिव इन एंड वेयर नो ह्यूमन एक्टिविटी इज अलाउड. दीज सेंचुरीज प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन एंड suitable living conditions to animals, especially endangered species and migratory birds. People living in wildlife sanctuaries are allowed to do certain activities such as grazing their livestock, collecting medicinal plants or firewood. They do not interfere with the well-being of animals. Inside the wildlife sanctuary, killing, poaching or capturing animals is strictly prohibited and punishable by law. These areas help to increase the population of animals which are on the verge of extinction. The Indian wildlife sanctuaries are home to some threatened wild animals like python, rhinoceros, golden cat, elephant, black buck, white-eyed buck, pink-headed duck, etc. देखिए लार्ज एरियाज ऑफ लैंड है उनको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में टर्न कर दिया गया है जिससे कि जो नेचुरल एनवायरनमेंट है वाइल्ड एनिमल्स के लिए वो उनको मिल सके, जहाँ पे वो रह सके, वहाँ पे कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं होती है। तो ये जो सेंचुरीज होती हैं ये एनिमल्स को सूटेबल कंडीशन प्रोवाइड करती हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है स्पेशली इंडेंजर्ड स्पीशीज़ को एंड माइग्रेटरी बर्ड्स को। और यहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज़ का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता, यानी कि यहाँ पे किलिंग या जो पोचिंग है या कैप्चरिंग है वो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड होता है। Some popular sanctuaries of India are as follows: Beer Moti Bagh Wildlife Sanctuary Punjab, Bharatpur Bird Sanctuary Rajasthan, Chilka Lake Sanctuary Odisha, Periyar Wildlife Sanctuary Kerala and Jaladapara Wildlife Sanctuary West Bengal.
Zoological parks. Zoos or zoological park are places where animals and birds are protected by keeping them in special cages or enclosure for public exhibition. Animals in the zoo are taken care by zoo authorities. Some zoos try to breed endangered species and at times release animals back into their natural habitats. Zoos play an important role in creating awareness among the people about the need to conserve wildlife. देखिए आपके ज़ू या जो आपके जोलॉजिकल पार्क होते हैं, आई एम श्योर आप लोगों ने विजिट किया होगा. यहाँ पे बर्ड्स एंड एनिमल्स को रखा जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है, स्पेशल केजेस या इनके लिए इनक्लोजर्स होते हैं और इनकी टेक केयर करते हैं ज़ू अथॉरिटीज़. कई बार क्या होता है कि इंडेंजर्ड स्पीशीज़ को यहाँ लाया जाता है ब्रीड करने के लिए एंड उसके बाद उनको रिलीज़ कर दिया जाता है उनके नेचुरल हैबिटेट्स में. सम फेमस जूज ऑफ आवर कंट्री आर कमला नेहरू जोलॉजिकल पार्क गुजरात, नेहरू जोलॉजिकल पार्क तेलंगाना, नेशनल जोलॉजिकल पार्क न्यू दिल्ली, इंदिरा गांधी जोलॉजिकल पार्क तेलंगाना. Botanical gardens. Botanical gardens are places where many varieties of plants are grown for scientific studies. They are places where the endangered species of plants can be protected, bred and reintroduced in the forest. बोटानिकल गार्डन्स में आपके होते हैं प्लांट्स, बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं प्लांट्स की जो साइंटिफिक स्टडीज़ के लिए ग्रो किए जाते हैं. यहाँ पे आपके एंडेंजर्ड स्पीशीज़ भी होते हैं प्लांट्स के जिनको प्रोटेक्ट किया जाता है, उनका ब्रीड किया जाता है, देन रीइंट्रोड्यूस किया जाता है फॉरेस्ट में. Some famous botanical gardens of a country are Saharanpur Botanical Garden, Saharanpur, Uttar Pradesh, Indian Botanical Garden, Shivpur, Kolkata, Jhansi Botanical Garden, Jhansi, Uttar Pradesh. Do you know Worldwide Fund for Nature, WWF, an International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, IUCN, are international organizations working for the conservation of wildlife. देखिए आपकी ये जो दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो वाइल्ड लाइफ की कंजर्वेशन के लिए काम करती हैं. Some famous conservation programs. In order to spread awareness among people to conserve biodiversity, some NGOs are actively participating in implementation of government plans and policies towards the conservation of wildlife. One Mahotsav, Project Tiger, Project Elephant, Project Lion are examples of such conservation programs. There are some movements which have immensely influenced the conservation of forest and wildlife. For example, Chipko movement and Apiko movement. देखिए बहुत सारे आपके फेमस कंजर्वेशन प्रोग्राम्स भी हैं जो कि आपकी कुछ NGOs जो हैं एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं इनमें. और जैसे कि आपके वन महोत्सव है या प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें या प्रोजेक्ट लायन की बात करें या ऐसे कुछ आपके कंजर्वेशन प्रोग्राम्स हैं. इनमें क्या होता है कि आपकी जो बायोडाइवर्सिटी है या वाइल्ड लाइफ का कंजर्वेशन हो सकता है. कुछ आपके मूवमेंट्स भी रहे हैं जिन्होंने कंजर्वेशन को जो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के कंजर्वेशन को हाईली इन्फ्लुएंस किया था, जैसे कि चिपको मूवमेंट एंड अपिको मूवमेंट. Knowledge zone. Sundarlal Bahuguna was an Indian environmentalist and Chipko movement leader. The idea of Chipko movement was suggested by his wife and him. He fought for the preservation of forests in the Himalayas, first as a member of the Chipko movement in the 1970s and later spearheaded the anti-TD dam movement from the 1980s to early 2004. सुंदरलाल बहुगुणा जो थे एक इंडियन एनवायरमेंटलिस्ट थे. इन्होंने ये चिपको मूवमेंट की लीडर है और इनका आइडिया था चिपको मूवमेंट देने का. इनको सजेस्ट किया था इनकी वाइफ ने और उन्होंने, जिससे कि जो फॉरेस्ट का प्रिजर्वेशन हो सका हिमालयाज़ में. इसके अलावा इनका दूसरा था जो उन्होंने किया था एंटी टेहरी डैम मूवमेंट. इनको उन्होंने अपोज भी किया था. प्रोजेक्ट टाइगर. इंडिया इज़ होम टू 80% of tigers in the world. However, due to illegal hunting, this species is slowly disappearing. So in April 1973, the Tiger Project was launched to give a special attention to their conservation. Tigers are protected and kept under supervision. The Worldwide Fund, in association with the Indian government, launched a project called Project Tiger to protect the tigers of India. The population of tigers in India forest is slowly decreasing and has become an endangered species. This project aims at the protection of this endangered species. The causes behind the decrease of tiger population are deforestation, poaching and taming of Indian rivers for satisfaction of human needs. इंडिया जो है आपका 80% ऑफ टाइगर्स का घर है इस वर्ल्ड में जो मिलता है. हालांकि इलीगल इनकी जो हंटिंग या पोचिंग होती थी उसकी वजह से जो स्पीशीज़ है डिसअपियर होनी शुरू हुई. तो अप्रैल 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया जिससे कि इनके कंजर्वेशन को एक स्पेशल अटेंशन मिला. अब टाइगर्स को प्रोटेक्ट किया जाता है अंडर सुपरविजन. WWF इन एसोसिएशन विद इंडियन गवर्नमेंट, इन्होंने एक प्रोजेक्ट जो लॉन्च किया था प्रोजेक्ट टाइगर. इससे क्या करना था, जो इंडिया के टाइगर्स थे उनको प्रोटेक्ट करना था.
अब जो पॉपुलेशन है टाइगर्स के इंडियन फॉरेस्ट में स्लोली डिक्रीज हो रही है और ये एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हो गया। तो इसके कई सारे रीज़न है, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन है या पोचिंग है, ये सारे रीज़न की वजह से एक एंडेंजर्ड स्पीशीज़ की कैटेगरी में आने वाला है। At present, there are 50 tiger reserves in India which are governed by Project Tiger. Project Tiger is administered by the National Tiger Conservation Authority. In 2006, there were 1,411 tigers, which increased to 1,706 in 2010, 2,226 in 2004, and 2,967 in 2018. आज के टाइम में 50 टाइगर रिजर्व्स हैं। अब आप ये देखिए 2006 में देखिए इतने टाइगर्स थे आपके, जो बढ़ के आपके हो चुके हैं 2,967 इन 2018। What is a red data book? Red data book is a public document which is created to keep the record of all the endangered animals and plants. It is maintained by IUCN. There are different red data books for plants, animals and other species. They provide complete information regarding the threat status of various species of plants and animals. Every country of the world has to maintain a record of the population status of the endangered species of the country. This record is maintained in the Red Data Book. The first Red Data Book was compiled in 1991. The Red List of India has the names of duck, chinkara, python, great Indian burst, snow leopard, khadial, one-horned pigeon, peafowl, Bharat swamp deer and leathery turtle. Around 3,000 animals and 20,000 plants are recorded in the Red Data Book. The IUCN Red List is a critical indicator of the health of the world's biodiversity. What is Red Data Book? It is a public document जिसमें जितने भी endangered animals या plants हैं उनका रिकॉर्ड रखा जाता है, और इसको कौन मेंटेन करता है? नन अदर देन IUCN। अब डिफरेंट डेटा बुक्स है आपके प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए या दूसरे स्पीशीज़ के लिए। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देते हैं, जैसे जो भी स्पीशीज़ हैं जो थ्रेट में, चाहे प्लांट्स के हैं चाहे एनिमल्स के हैं। तो सबसे पहले जो फर्स्ट रेड डेटा बुक थी आपकी कंपाइल हुई थी 1991 में। तो बहुत सारे एनिमल्स आपके जो इंडिया के हैं रेड लिस्ट में हैं ये सारे के सारे। अब अराउंड 3,000 एनिमल्स एंड 20,000 प्लांट्स को रिकॉर्ड किया गया है रेड डेटा बुक में। माइग्रेशन, the process where birds or other animals move annually from the natural habitats to far off places is called migration. Species make these long distance movements during specific seasons to escape the harsh climatic conditions and move to regions of favorable weather for food, water and breeding. Birds that cover long distances to reach another land are known as migratory birds. Siberian crane is one of the most common migratory bird that comes to India every year for a few months. On the onset of winter season in Siberia, these birds fly thousands of kilometers and come to warmer places like India for food, breeding and nesting. They follow set pathways that include suitable habitats where they can stop to rest and refuel along the way. Migration का मतलब देखिए कुछ बर्ड्स होती हैं आपकी जो अपने नेचुरल हैबिटेट को छोड़ के दूसरे फार ऑफ प्लेसेस पे चली जाती हैं, उसे कहते हैं माइग्रेशन। और ये जो स्पीशीज़ एक लंबा डिस्टेंस कवर करके आती हैं, और ये ऐसा क्यों करती है? अपनी जिस हैबिटेट में ये रहती हैं वहाँ पे कुछ हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस हो जाती हैं, तो उससे बचने के लिए दूसरे प्लेस पे चली जाती हैं। इनके में एग्जांपल है आपका साइबेरियन क्रेन, जो आपकी साइबेरिया से आती है इंडिया में। हर साल जब विंटर सीजन स्टार्ट होता है ये साइबेरिया से उड़ते हुए और ये इंडिया में आ जाती है। भरतपुर बर्ड सैंक्चुरी इज अ सीजनल डेस्टिनेशन ऑफ मेनी माइग्रेटरी बर्ड्स। सम कॉमन माइग्रेटरी एनिमल्स आर टर्टल्स, व्हेल्स, fish and butterflies. Eels which live in fresh water go to the sea to lay eggs. After hatching of the young ones, eels return to the freshwater river again. भरतपुर बर्ड सेंचुरी है, सीजनल डेस्टिनेशन है बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स का, और इसमें आपके बहुत सारे एनिमल्स हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स हैं या एनिमल्स भी हैं जैसे टर्टल्स, व्हेल, फिश एंड बटरफ्लाइज। ईल जो देखिए फ्रेश वाटर में रहती है, ये सी में जाती है एग्स ले करने के लिए, और हैच जब इसके यंग वंस हैच हो जाते हैं ये ईल वापस फ्रेश वाटर में आ जाती है। Reforestation. Reforestation is replanting new trees on land where forests have been cleared or destroyed by deforestation. It is important to plant the same species of trees which were cut. It is also important to plant trees in large numbers to have a green cover for maintaining the earth's temperature. It is interesting to note that reforestation can take place naturally also. If the deforested area is left for some time, it re-establishes itself by the natural growth of trees. There is no role of human beings in natural reforestation. It is our duty to maintain the balance in the nature by planting trees in place of cutting them down to avoid the consequences of deforestation.
रिफॉरेस्टेशन का मतलब है न्यू प्लांट्स को रीप्लांट करना लैंड पे जहाँ पे फॉरेस्ट आपके क्लियर हो चुके हैं या फिर डिस्ट्रॉय हो चुके हैं बाय डिफॉरेस्टेशन। ये इंपॉर्टेंट है कि हम सेम स्पीशीज ऑफ ट्री लगाए जो आपने काटा था, राइट। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ट्रीज को प्लांट करना लार्ज नंबर, जिससे कि जो ग्रीन कवर है वो आपका अर्थ का जो टेम्परेचर है वो आपका मेंटेन रह सके। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जो रिफॉरेस्टेशन है ना वो नेचुरली होता है। अगर आप डिफॉरेस्टेड एरिया को कुछ टाइम के लिए छोड़ दो, ये वापस से रीएस्टैब्लिश हो जाएगा, राइट। इसमें ह्यूमन बीइंग का कोई भी रोल नहीं होता है। तो हमारी ड्यूटी बनती है कि हम एक बैलेंस बना के रखें बाय प्लांटिंग ट्रीज इन प्लेस ऑफ कटिंग देम डाउन, राइट, एंड जिससे कि जो डिफॉरेस्टेशन के कॉन्सिक्वेंसेज हैं हम उसे अवॉइड कर सकें। Recycling of paper. Paper is one of the most important products of forest. According to a research, 17 trees are required to manufacture 1 ton of paper. This causes a double disadvantages as we lose greenery and increase pollution due to the manufacturing process. So it is important to plant trees for obtaining paper as well as other products. The paper must also be saved, reused and recycled. This helps not only in saving trees but also saving water and energy used in production of paper. This also reduces the use of harmful chemicals. Paper and paper products is another major reason of deforestation. Even if one sheet of paper is saved every day, many trees can be saved from being cut down. Recycling of paper can help in reducing paper consumption. Ideally, paper can be recycled 5 to 7 times. Paper recycling is a process of using old paper products and turning them into new reusable paper products. Many waste paper products are recycled. The paper items which can be recycled are newspapers, books, notebooks, diaries, calendars, envelopes, etc. देखिए, पेपर आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट जो आपको फॉरेस्ट से मिलता है, और अगर एक रिसर्च के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 17 ट्रीज लगते हैं 1 टन ऑफ पेपर बनाने के लिए। और इसका डबल डिसएडवांटेज है, एक तो ग्रीनरी लूज होगी, ऊपर से पोल्यूशन भी होगा जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आपका होता है। सो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि हम ट्रीज़ को प्लांट करें, क्योंकि हमें उनसे पेपर चाहिए। पेपर के अलावा और सारे भी प्रोडक्ट्स चाहिए। पेपर को आपको सेव भी करना है, रीयूज़ करना है, रिसाइकिल करना है, और ऐसा करके हम बहुत सारे पेड़ों को सेव कर सकते हैं। पेड़ों को तो सेव कर सकते हैं, साथ ही साथ हम वाटर को भी सेव कर सकते हैं एंड एनर्जी भी सेव कर सकते हैं जो पेपर के प्रोडक्शन में लगती है, राइट। तो रिसाइकलिंग ऑफ पेपर क्या होगा, देखिए, एक जो आइडली जो पेपर होता है 5 to 7 टाइम्स आपका रिसाइकिल हो सकता है। पेपर रिसाइकलिंग का प्रोसेस है जिसमें आप ओल्ड पेपर प्रोडक्ट्स को यूज़ कर सकते हो, उनसे नया रीयूजेबल पेपर प्रोडक्ट बना सकते हो। बहुत सारे आपके जो वेस्ट पेपर्स हैं, प्रोडक्ट हैं, उनको रिसाइकिल किया जा सकता है, जैसे कि आपकी न्यूज़पेपर, बुक्स, नोटबुक, डायरीज, कैलेंडर्स, एनवलप्स, ये सारे ही आपके रिसाइकिल हो सकते हैं। रिसाइकलिंग ऑफ पेपर सेव्स ट्रीज, saves energy, saves water and reduces pollution as a harmful chemical required for paper making is reduced. Paper can be saved by following the 3 R's principle of reduce, reuse and recycling. पेपर की जब रिसाइकलिंग होती है उससे ट्रीज बचते हैं, एनर्जी बचता है, वाटर बचता है एंड पोल्यूशन रिड्यूस होता है। तो आपको 3 प्रिंसिपल्स अपनाने हैं, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। लर्निंग आउटकम: deforestation can be caused due to human interference and natural causes. Desertification takes place due to deforestation or overgrazing of the green cover. Wildlife India is diverse because of diversity of habitats and ecosystems. Conservation aims to protect and preserve natural resources. Biosphere reserve areas are meant for conservation of biodiversity of a specific area. Species are divided as endangered, vulnerable species and rare species as per an organization called International Union of Conservation of Natural Resources. Endangered species are on the verge of extinction as they are decreasing in number due to killing and reduction of habitat. Human activities such as killing, capturing or poaching of animals are totally banned. Project Tiger aims at the protection of tigers in India. Deforestation can be done naturally or artificially. Paper must be saved, reused and recycled in an effort to save trees. Children, I hope आपको ये चैप्टर समझ आया होगा and I hope in order to save trees, you will save paper by following 3 R's principle. इस चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे।